Forward-looking legislation reflects the firm vision and bold leadership of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji, under whose guidance India's energy sector has moved from chronic shortage to confident self-reliance. Sir, it is important to acknowledge the strong foundation laid by Shri Atal Bihari Vajpayee ji through the Pokhran nuclear test 1998. He built forward-looking confidence in the nation and proved the nuclear capability is essential for the national security and not deepening on others. He firmly believed that the nuclear energy should serve both defense and development. Sadly, back-to-back Congress governments failed to carry this vision forward. Sir, I will give you a small example, sir. I came from a very small village. Sir, it's agony, you don't know. When I was a student, I used to pray for the electricity, sir. Let it come. If it goes, it will come next day, sir. But today it is not like that, sir. It is only because the vision of our Narendra Modi ji. See, everywhere there is a development happening, sir. Sir, before 13, under UPA government, India suffered from weak and power cuts was common in those days. Rural families received only 10 to 12 hours of power, sir. And even cities suffered regular power cuts despite repeated promises. The UPA government added less than 7 gigawatts of nuclear capacity, pointing delays and no clear vision in the nuclear plants. Sir, after 2014, under the NDA government led by Prime Minister Modi ji, the situation changed completely. Every village was electrified. Rural India now receives 20 to 22 hours of electricity, and the urban areas enjoy 24/7 non-stop power supply, sir. This change has improved education, healthcare, industry, and digital infrastructure across the country. However, sir, India's electricity demands continues to rise due to manufacturing growth, urbanization, artificial intelligence, and data centers. Renewable energy is necessary but cannot alone provide round-the-clock base load power. Nuclear energy therefore remains necessary. The Shanti Bill 25 updates outdated nuclear laws and allows limited private and joint venture participation, while ensuring that the government retains complete control over the sensitive areas such as fuel, enrichment and reprocessing and waste management. This carefully balanced guarantees safety, security and faster growth. Under Prime Minister Modi ji, nuclear capacity has nearly doubled, new reactors have been approved, and financial support for the atomic energy has increased significantly. The bill also promotes small modular reactors which are safer, faster to build and sustainable for the different regions of India, sir. Unlike during the Congress rule, marked by the delay and doubt, this government displays strategic confidence. Today, nation, including Russia, France, United Nations, United States of America, Japan, work with India because they trust our Narendra Modi ji leadership, policy, clarity and commitment. To conclude, sir, I'll give us two small examples. So when I was small, my granny and my auntie used to prepare food for us, sir. That is, now they call it millet. But for us in Karnataka, it is called ragi mudde, sir. Early morning, they used to get up 4 o'clock, and for 20 people, they have to work 5 to 6 hours to make that food. So today, one machinery has come, sir, that prepares 100 ragi mudde in 10 minutes, sir. See, that is the development. I say, our all friends, they are still in 1947, sir. They are not going forward.
but our leader is trying to make the developed India and is thinking about 2047, sir. But still they are there only. I don't know why always any good things happen in our country, there will be a big opposition, sir. So I pray for them, let God give them Shanti, 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 and let India get a developed country with our leaders' vision, sir. Thank you, sir. Thank you, Mr. Jagesh. Honorable Member Priyanka Chaturvedi. Sir, thank you so much for giving me a chance to speak on this bill. Jagesh ji was talking about how important Shanti is. But when a bill called Shanti brings Ashanti, then I stand here to oppose that bill, sir. सब यहाँ पर जो भी यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं इस बिल का और बता रहे हैं कैसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब होगा इस बिल के माध्यम से, मैं उन सभी से पूछना चाहूँगी यहाँ पे कितने लोग अपने गृह क्षेत्र या कार्य क्षेत्र में ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स रखने की कोशिश करेंगे? 30 किलोमीटर की रेडियस में बता दें। यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इस टाइम की जो सरकार है, इस समय पे जिस समय में हम रह रहे हैं, कौन सी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो खड़े होकर बेखौफ तरीके से सरकार से कह सके कि जो गलत हो रहा है वो गलतियां हैं, उसका सुधार होना चाहिए? एक कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है इस देश में जो इंडिपेंडेंट होगा। सर, तीसरी चीज, ये प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की बात है। मैं प्राइवेट प्लेयर्स को भी कौन सा ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आएंगे उनको अकाउंटेबल रख सकता है? मैं सर आपका ध्यान 1984 की जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। 3,500 लोगों की मौत हुई थी, 15 से 20,000 लोग वही लीक रिलेटेड डिजीजेज में मारे गए थे, 5 लाख जो वहां के लोग थे, रहवासी थे, वो इंजर हुए थे, और 2 सदियां 3 सदियां बीत गई सर, वो अभी भी वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के शिकार हैं और कोई भी उसमें गिल्टी नहीं पाया गया। तो ये देश की सच्चाई है कि जहां रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, आने वाली सदियां, अगर हमने ये एक दिन में लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है, इस पे चर्चा नहीं हुई है, आने वाली सदियां हमें माफ नहीं करेंगी अगर हम इसका ऑपोजिशन नहीं करेंगे और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स पुख्ता नहीं करेंगे। सर, चेरनोबिल हुआ था और चेरनोबिल की एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कोट था। वो कोट था, एवरी लाई वी टेल incurs a debt to the truth, sooner or later the debt is paid। सर, हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ये डेट क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं? हम सप्लायर लायबिलिटी को पूरी तरीके से निकालने की बात कर रहे हैं। जो लायबिलिटी है हम कैप कर रहे हैं 3,000 करोड़ पे। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो फुकुशिमा हुआ था, फुकुशिमा के क्लीनअप में ही $200 बिलियन का खर्चा हुआ है और अभी भी चल रहा है। जो चेरनोबिल हुआ था, $700 बिलियन का खर्चा हुआ और आज भी उसका खर्चा लागू है। और यहाँ पे हम 3,000 करोड़ कैप करने जा रहे हैं, सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज हटाने जा रहे हैं। दूसरी चीज सर, ऑपरेटर लायबिलिटी भी हमने कैप कर दी है। तो किस तरीके से हम उनको पूरी की पूरी छूट दे रहे हैं? आप आइए, हमारे देश में आइए, काम करिए, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से काम करिए, पर आपकी हमारे सिटीजन्स की तरफ कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। सर, आरटीआई के माध्यम से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है कि क्या उसमें कमियां हैं और क्या कमियों को दुरुस्त करना है। आरटीआई को भी डाइल्यूट किया जा रहा है। सर, आई एम वाइंडिंग अप सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, 3-3 मिनट में पूरा नहीं होगा सर, इसमें वाइड स्टेक कंसल्टेशन होना चाहिए, पर खैर हो नहीं रहा है। मैं बस यही कहूंगी, जो ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी है, जो बोर्ड है, उसको पूरी तरीके से मजबूत तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, हमारे देश में आकर ये लोग प्रॉफिट जरूर करेंगे, पर सिटीजन्स को के हाथ में एक लंबा चौड़ा बिल थमा देंगे, जो वेस्ट एनर्जी से लेकर, हैजार्डस वेस्ट से लेकर, और जो लायबिलिटी जान और माल की होती है, वो हमारे पास छोड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you, Tirumati Priyanka Chaturvedi. Now, Honorable Member Harshvardhan Sringala. Amen, sir. Vanakkam. Thank you very much for giving me this opportunity to speak on this important sustainable harnessing of atomic energy for transformation, or what is called the Shanti Bill. I want to felicitate the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji,
for his vision, and our Minister, Shri Jitendra Singh ji, for bringing this bill for our consideration in this House. Mr. Chairman, sir, India stands today at a decisive juncture in its energy journey. The Shanti Bill is a reform that will shape India's civil nuclear sector for generations to come. This bill modernizes the Atomic Energy Act 1962, ends decades of fragmented governance, and establishes India's first liberalized, investment-ready framework for nuclear power, while firmly safeguarding national security and public safety. Sir, I want to also convey to you that in my capacity as Foreign Secretary of the Government of India from 2020 to 2022, I was an ex officio member of the Atomic Energy Commission, which oversaw the nuclear energy, in our entire nuclear energy program. In the Atomic Energy Commission, a lot of the discussions were on the liberalization of our nuclear energy sector. And I'm very happy that today we are seeing the conclusion of that process in the Shanti Bill that is before us. I have to say that Dr. Kakotkar was also a member of the Atomic Energy Commission. He still is a member. जयराम रमेश जी ने कुछ उनके बारे में जिक्र किया, काफ़ी उनके बारे में उनका कोट्स भी दिए. वहाँ वो सदन में नहीं है अभी, पर मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि शायद इनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो कोट नहीं किया आपने डॉक्टर काकोटकर को. सर, जिन्होंने ये एटॉमिक एनर्जी, हमारे परमाणु ऊर्जा का मुद्दा ध्यान से फॉलो किया होगा, वो आपको बताएंगे कि हम इस बिल, जो शांति बिल है, इसके इंतज़ार में 15 साल ठहरे हैं. मतलब इसका 15 साल इंतज़ार हुआ है. और इस बिल का यही है कि 2010 में यूपीए ने, कांग्रेस ने सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट अपनाया था. इनका यही इरादा था कि ये एक्ट और इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो 123 एग्रीमेंट कहते हैं, 2005 में साइन हुआ था, इसके माध्यम से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में आए, खास तौर से यूएस से. पर ये एक्ट में इतनी कमियां थी कि इसमें से एक फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट भी नहीं आया, और हमारे देश को एक पैसे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आना था वो भी नहीं आया. कांग्रेस के समय में इनका लक्ष्य था कि 2032 तक 63 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का कैपेसिटी हम क्रिएट करेंगे, पर इन्होंने 7 गीगावाट तक भी क्रिएट नहीं किया. और अभी हम सुन रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर सेक्टर में ये विरोध कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन में भी ये विरोध कर रहे हैं. शायद इनको याद नहीं होगा कि 2008 में इसी गठबंधन में विवाद हुआ था और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस के खिलाफ लाया गया था, जिसमें हारते हारते जीत गए. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की धमकी देना पड़ा, तब जाके कुछ उसमें समाधान हुआ. तो इसमें जो पार्टीज, जो दल उसी वक्त मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के चर्चा कर रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के प्रस्ताव दे रहे थे, अभी आज इसी के खिलाफ आए हैं. सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, India has made historic progress in clean energy. As of late 2025, He should yield. He is not yielding. He is not yielding. sir, in 20, Please, sir. Rajiv ji, please, sir. I am only giving, sir, what are facts of the matter. No, he is not yielding. And this is the response to what Mr. Jairam Ramesh has said. Are you ये मैं yielding? कहना चाहता हूँ, You are not yielding. You are not yielding. You are not yielding to him.
Please sit सर down. मैं Please कंप्लीट sit कर down. लूं जो मुझे कहना है। Please sit down. Please sit down. 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ग्लासगो में COP26 के समिट में थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 2030 तक हमारे जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। और मुझे खुशी हो रही है कि आज 5 साल पहले हमने ये पूरी कर दी है और आज भारत का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 50% से ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी है। मतलब 500 गीगावाट्स में से 250 गीगावाट से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी का महत्व पहले भी हमारे सुधामूर्ति जी ने एक्सप्लेन किया है। बेस लोड फैक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसमें से हमारा एनर्जी का ट्रांसमिशन स्मूथ हो सकता है। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश में और रिन्यूएबल एनर्जी में। और न्यूक्लियर प्लांट्स डिलीवर राउंड द क्लॉक कार्बन फ्री पावर, generating among the highest output per megawatt of any clean source. As India prepares to retire aging coal plants and as electricity demand more than doubles by 2040, nuclear energy, sir, becomes a core pillar of sustainability, grid stability, and energy security. Sir, I want to just briefly outline the advantages of the Shanti Bill because there has been a lot of statements that have not fully understood what this offers. The Shanti Bill enables controlled private, foreign, and joint venture participation in nuclear power generation while ensuring that strategic functions such as uranium enrichment, fuel reprocessing, and spent fuel management remain exclusively with the Government of India. Let me state clearly, this is not privatization, this is partnership with accountability. Now, there are many who have talked about the fact that we should oppose foreign direct investment, we should oppose privatization. On that, I want to say that the vision of Prime Minister Modi is to take our nuclear power sector to 100 gigawatts by 2047. Today, we are at close to 9 gigawatts. And that will bring India, make India not only a player, a global player, but one of the leading global players in the world. Now for that we need an investment over 19 lakh crore, and that is clearly not possible from the realm of the public sector. We have to open this up to the private sector. And those who are opposing privatization today were also opposing privatization when this was introduced in the electricity sector, when private participation was suggested. But today India is the world's third largest power producer in the world. Similarly, when there was an opposition to telecommunications sector being liberalized and the private sector coming in, today we can see that this has become, internet telephony is one of the cheapest in the world and is the largest in scale anywhere in the world in India, again due to private sector participation. In the defense sector, where there was a lot of skepticism about the involvement of private players, during the UPA government, 70% of our equipment, defense equipment, had to be imported. Today, I'm very happy to say that under the Modi Sarkar, 65% of our defense equipment is manufactured in Atmanirbhar Bharat. So that, I think, is something that we need to keep in mind. Honorable Sir, I want to say that our technological foundations are solid and indigenous. India's pressurized heavy water reactors, fast breeder reactor program, and the 700 megawatt reactor fleet now have over 90% domestic content. From heavy forgings to safety systems, the nuclear supply chain exists entirely within India. The Shanti Bill will accelerate Atmanirbhar Bharat, not dilute it, creating high-skilled jobs, boosting advanced manufacturing, and energizing our innovation ecosystem. Now, a number of comments was made on the involvement of private players.
Now, it is very clear that it is not a few private players. There is a very large number of people, large number of companies from the private sector who have expressed interest in investing in this nuclear energy sector. And I think that is what will unleash the full potentials of India's industry in this very, very important sector. Not only that, there has been also comments that in many countries, foreign investment, or rather foreign countries have decided not to go in for nuclear energy anymore. Let me say that during the COP26 meeting, over 22 countries pledged to triple nuclear capacity by 2050. 22 countries in the world. And let me also give you a breakup of the countries and what they have in terms of privatization in their own countries. In nuclear projects around the world, UK, for example, its new reactor will be financed 45% by the UK government and 55% by private investors. Canada is a similar thing. United States, virtually all nuclear plants are owned by private utilities. There was a mention by Honorable Jairam Ramesh ji that France has a policy where all nuclear plants are controlled and owned by the government. Let me say that France energy giant, sir, EDF, combines public backing with capital markets. In other words, they ensure there is a private sector inflow in whatever projects they are undertaking. Even in emerging nations such as China, state nuclear corporations partner with private suppliers and financiers. So there is a long list of countries that have used joint ventures with private capitals to further their nuclear energy industries. And I think India is no different from that point of view. Sir, there was a reference to the fact that in 1948, 1962, there was an Atomic Energy Act that was introduced, that we were one of the first countries to go in for atomic energy. My question is that when, under the Nuclear Non-Proliferation Treaty, a line was drawn in 1967 that divided the world between haves and have-nots, those states that had nuclear capabilities and those states did not, in the light of the history of Chinese invasion, in the light of the history of China itself testing its nuclear weapons in the 1960s. My question is, why did we not go for a nuclear option at that time? Why did we, in view of our national security interests, opt out of that, I would say, possibility? It took, sir, it took the leadership of Atal Bihari Vajpayee ji in 1998 to test the Pokhran nuclear, to undergo the Pokhran nuclear tests and bring India firmly into the list of de facto nuclear powers. And what I want to also say is that, sir, that was conducted as a peaceful nuclear test for civil nuclear energy purposes. I think that was very, very clearly specified. That was different in 1998 when it was very clear that we were testing it for purposes other than civil nuclear. And here, it would be recalled that Honorable Mr. Chidambaram, member of this House, who was then Finance Minister, while speaking in Parliament, undermined India's assertion as a nuclear power, reflecting a deeper heritage, a deeper hesitation within the Congress leadership about embracing nuclear capability with confidence. And today, I think we have a situation where we can say that the 2008, not only in 2008 did we have the opportunity to break that, I would say, hold of diplomacy and isolation. That definitely was there, and I mentioned that earlier also. But subsequently, today, we have the opportunity to take that initiative forward in the Shanti Bill and bring it to fruition. So I just conclude by saying that
मैं कोटिंग आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही हैज राइटली सेड, वो कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है तो हमें हर सेक्टर में नया विचार और नए सहयोग के दरवाजे खोलने होंगे. Opening the nuclear sector is a calibrated, regulated and responsible manner, in a calibrated manner, is precisely such a step to make India not only one of the world's players, but one of the world's greatest players in the nuclear energy sector. Sir, the Shanti Bill, I'm just concluding, sir, is not merely about power plants, it is about powering India's growth, protecting India's industry, creating skilled employment and securing energy for generations to come. I commend the Honorable Prime Minister and the government for their foresight and courage, and I urge this House to support this landmark reform in the supreme national interest. Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, Thuru Harshavardhan Avarkale. Now, Honorable Member Dr. Fauziaka. Dr. Fauziaka. Honorable Vice Chairman, I rise to speak on the Shanti Bill 2025. Sir Albert Einstein said that peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. This is what he spoke about peace, which is the meaning of Shanti, sir. So this bill is being presented as a historic reform to unlock nuclear energy for Vikasit Bharat. The benefits of nuclear energy cannot be denied, sir. But if we look beyond the slogans, we are socializing risk, privatizing profit, and postponing the hardest questions on safety, waste management, and accountability. That is why it engages the constitutional duty of the state under Article 21 of Protection of Life and Liberty. At its core, sir, this bill raises serious issues that Parliament cannot ignore. Number one, the issue of national security. So this bill risks national security by allowing private nuclear ownership with weak safeguards, with enabling hidden foreign control through shell companies, funds, software, or AI over critical nuclear infrastructure. Number two, sir, liability and foreign suppliers. The bill shifts to a purely operator-centric liability model, with only a very limited right of recourse. In doing so, sir, it moves away from the principle of absolute liability laid down by the Supreme Court for hazardous industries. Foreign reactor vendors and equipment manufacturers are effectively shielded here. Indian operators are exposed, and when something goes wrong, it is the Indian taxpayer who will ultimately pay. This is strategic vulnerability, sir. Sir, number three, the liability caps. The second schedule fixes the liability at 3,000 crores, which is about $410 million for the larger reactors and much less for the smaller units. Sir, in the Bhopal gas tragedy, the settlement had reached in 1989 was about $470 million. Today, this bill proposes a lower dollar value cap for nuclear accidents, even though nuclear damage may be far longer and far widespread than anything. Accidents are not measured in megawatts. They are measured in lives, in land and time. Sir, number four, this is about intergenerational justice, sir. The bill allows us to expand capacity today, but leaves future generations with two unresolved burdens in the form of high-level radioactive waste, for which there is still no roadmap, no clear roadmap for final disposal. So, half a minute. My last point, number five, the bill is very detailed on central institutions, board, claim commissions, appellant tribunal, but silent on any formal role for state governments, for local bodies, district disaster authorities in sitting decisions. 2 seconds, sir. Or off-site emergency plans. All core powers are centralized with the central government. So that's why, sir, I recommend that this bill go to a JPC or a standing committee. Otherwise,
जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुर्ख रू जिल्ले इलाही होंगे। थैंक यू सर। Thank you, Dr. Fausiaka. Next is Honorable Member Dr. Palmer Salam Singh. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. Today we debate the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. And I tell this august House that this is not just an energy bill. This is a survival bill. It is a prescription for the health of our economy and the health of our people. And that's why I rise to support this bill. First of all, before moving forward, I congratulate our Prime Minister sir and our Minister sir, Jitendra Singh ji, for this wonderful bill, because without visionary leadership of our Prime Minister sir, this was not possible. We have to compare some data, sir. All have discussed only on electricity production. So what was in 2014 and what is now? In 2014, the total capacity of electricity production was 248.5 gigawatt. Today, we moved up to 505 gigawatt by this December 2025. In that, the solar electricity generation was 2.6 gigawatt only in 2014. Today is 127 gigawatt. Again, in 2014, the wind power was 21 gigawatt. In 2014, it is 53 gigawatt. Overall, per capita consumption in 2014 was 957 kilowatt. That progressed up to 1395 kilowatt per capita consumption. That will be the further parameter in future of the developed country. Another parameter, that is the shortage. It was 4.2% in 2014. Today is hardly 0.1%. That's the greatest improvement ever. And this has happened because of the visionary leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji. Honorable Chairman, sir, in medicine we often speak of homeostasis, the perfect balance required in our body for the functioning of all organs. A nation too needs a balance. We need the raw kinetic energy of growth, balanced by immune system of safety and accountability. India is currently a nation with rapidly accelerating metabolism. We are digitalizing faster than any nation on the earth. The preamble of this bill rightly notes that the explosion of artificial intelligence, high-performance computing, and data centers requires massive, stable, and round-the-clock power. Wind and solar are our essential instruments, but they are intermittent. Nuclear energy is the muscle builder, the base load that runs 24/7. We have a target of 100 gigawatt of nuclear capacity by 2047. To achieve this form of our current capacity is mammoth task. The state alone cannot fund this treatment. We need private capital too. This bill under clause 3 wisely permits any company to participate in the sector, moving us away from the state-only monopoly. Sir, clause 3 of this bill does exactly that. It invites the private sector to build the body, while the government jealously guards the soul, the fuel cycle. Sir, but does this mean we are reckless? No. The bill creates a robust safety authorization regime. It elevates the Atomic Energy Regulatory Board to a statutory body.
As a doctor, I would never prescribe a powerful drug without monitoring a patient. Similarly, this bill prescribes powerful energy, but with the strictest regulatory monitoring mechanism our laws have ever seen. Sir, I listened carefully to my friends in the opposition. I heard the words like monopoly, the capped liability. Honorable members, let us look at the pathology of these arguments. The opposition argues that capping liability under clause 13 and the second schedule puts people at risk. I say to you, unlimited liability is a myth. It is a legal fiction that ensures no liability is ever paid because no project ever gets built. By clearly defining the operator's liability and mandating insurance under clause 15, we are ensuring that if, God forbid, an incident occurs, there is actually bankable money on the table for compensation. We are making the system solvent. We are replacing theoretical protection with the practical financial security. On monopoly, your fear private monopoly. This bill breaks the biggest monopoly of all, the state monopoly. It invites competition, it invites innovation. Look at the South Korea, look at the France. Their citizens enjoy cheaper power and cleaner air because they embrace this model. Energy poverty is the worst disease the nation can suffer. It kills industries, kills jobs, and it kills hope. This bill is the cure. Sir, Honorable Chairman, sir, let me take off my politician's hat and put on my white coat. Many of this house hear nuclear and think only bombs and boilers. You are missing the miracle. Today morning also we have discussed such thing. A nuclear reactor is not just a power plant, it is a factory of isotopes. The fission process creates many byproducts that is called radioisotopes. That are the most sophisticated tools in the modern medicine. The preamble of this bill explicitly states the purpose includes application in healthcare, food, water, and agriculture too. In agriculture, we lost 40% of our produce to rot. Using gamma radiation, we can sterilize food, extending the shelf life of onions, potatoes, and grains without using carcinogenic pesticides. This is preventive medicine of our nation's food security. In water, the waste heat from these reactors can drive massive desalination plants, turning seawater into potable water too. But the most emotional argument for this bill is the oncology wards of our hospitals. Cancer, Honorable Chairman, sir, is an epidemic. As a doctor, I have looked into the eyes of the patient who needs scans or therapies that are simply too expensive or unavailable because the isotopes have to be imported from outside. Diagnostic power, we can discuss technetium-99M. This is the workhorse of our medical imaging. It detects cancer spread in bones, it checks heart function, it has short half-life. We cannot import it easily. We must make it over here. By allowing private research reactors under clause 9 and clause 3, we can have domestic production lines for molybdenum-99, the parent of this isotope. We have therapeutic power, and we are moving towards theranostics, or we can say theragnostics, therapy plus diagnostics. Iodine-131, lutetium-177, yttrium-90. These are the examples of these isotopes. These are not just chemicals, they are radioactive keys that log onto the cancer cells and destroy them from inside, sparing healthy tissues. This is the targeted alpha therapy. That will be the game changer in the future. Currently, our capacity to produce this is limited by the number of reactors we have. This bill opens the door for research reactors and radiation facilities to be set up by private players and research bodies. Imagine a future where specialized medical reactor is funded by a consortium of Indian hospitals dedicated solely to producing life-saving isotopes. This bill makes legal. It brings the cost of cancer scan down from thousands of rupees to hundreds. It makes survival affordable. Furthermore,
For rare diseases, radiopharmaceuticals are often the only hope for palliation for cure. By liberalizing the research sector under Clause 9, we encourage our scientists to patent invention in this field, a right explicitly protected under Clause 38. We are unleashing the genius of scientists to solve the pain of Indian patients. In the end, I conclude, Honorable Chairman Sir, to oppose this bill is to oppose the light that Honorable Chairman Sir, to oppose this bill is to oppose the light that power a child study lamp. To oppose this bill is to oppose the isotope that save a mother from cancer. Thank you, Doctor. To oppose this bill is to choose stagnation over science. This bill is the balance, the leisure to economics with the sanctity of human life. It provides the power to grow and power to heal. As a doctor, my prescription is clear. Doctor. The House must pass this bill. India is ready for its next great leap of vitality. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, Dr. Palmer. Honorable Member Kartikeya Sharma. Why has But nuclear energy contributes only about 1.7% of our total energy mix today. Let us compare this with other countries. France produces nearly 70% of its electricity from nuclear power. The United States produces about 19% of its electricity from nuclear power. China is also rapidly expanding nuclear capacity to support its factories and cities. These countries use nuclear power to power industry, jobs and economic growth. India, despite its growing energy demands, remains stuck at a very low nuclear energy adoption. Sir, this was not because India's scientists failed. It was not because our engineers lacked skill. It was not because our technology was unavailable. It was not because the nation lacked vision. It was because policy failed. It was because decision making was delayed. It was because risk taking was avoided. And it was because reform was postponed for far too long, since there was no political will to implement it. Sir, India's nuclear journey began with a foresight and confidence, an India that would never be energy dependent. Three-stage program was made, rooted in thorium, was his answer to permanent energy security. But for many years, under successive governments, this program moved very slowly. Fast breeder reactors were delayed, thorium enrichment was not pushed seriously, and major projects took more than a decade to complete. As a matter of fact, the prototype fast breeder reactor approved in 2004 took almost 2 decades to reach the core landing. Projects like Kakrapar 3 and 4, which would have taken 5 to 6 years, stretched to nearly 10 years. Sir. The Shanti Bill directly addresses this by ending over-centralization, opening the sector to regulated private partnership, and bringing capital, timelines and accountability into nuclear project execution, as it is done in the rest of the world, sir. Sir, the present government has set a target of 100 gigawatt of nuclear power by 2047. This is necessary for Viksit Bharat, energy security and clean growth. But reaching 100 gigawatts needs huge investment. Nearly 20 lakh crores will be required over the next 2 decades. The government alone cannot fund this. This is why opening the nuclear sector to the regulated private participation is essential. The Shanti Bill does exactly this, sir. The government remains in control of safety and regulation. National security is protected, but the private companies are allowed to invest, build and innovate. As a result, this will speed up projects, it will reduce delays, and it will help India add capacity faster. This bill also prepares India for future needs, sir. Sir, small modular reactors can supply steady electricity to data centers, smart cities and industrial zones, delivering captive power to them, sir. Sir, not only this, SMRs have been known to be put on boats and other devices where 50 megawatts, 100 megawatts can be portably used in far-flung areas where energy cannot be produced.
And this can actually become the battery for digital life and digital India in future. Moreover, a strengthened nuclear ecosystem will deliver benefits far beyond electricity. Nuclear facilities produce medical isotopes that can be used in cancer diagnosis and treatment, atomic medicine, agriculture research, and food irrigation. And most importantly, the advent of AI has pushed us for the need of more power, sir. The Shanti Bill also unlocks private funding for nuclear research and development. By opening the nuclear sector to private participation, the bill brings long-term investment into research, strengthens training capacity, and fully taps India's nuclear talent. Today, only 36% of India's R&D expenditure comes from the private sector. In comparison, private R&D accounts for 68% in the United States and nearly 75% in China. The Shanti Bill directly addresses the gap by enabling an ecosystem for private R&D participation in nuclear energy, sir. Sir, the opposition has repeatedly claimed that this bill dilutes safety without engaging with what the bill actually provides. So safety in nuclear power cannot be understood by placing fear before the facts. As Marie Curie once said, nothing in life is to be feared, it is only to be understood. So sir, सड़क पे चलने एक्सीडेंट के डर से सड़क पे चलना हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए मैं उनको ये कहना चाहूंगा, डरिए मत, डर के आगे जीत है. The bill is about replacing fear with understanding. Clause 17 of the bill reinforces the authority of the Independent Nuclear Regulator, AERB, and ensures that no reactor, public or private, can operate without continuously regulatory oversight. This bill accelerates capacity, not risk. Honorable Chairman, sir, for many years, India moved slowly in nuclear energy. Today, the government has chosen reform over hesitation. This bill removes old barriers. It matches ambition with action. And it puts India on the path of energy independence. In ancient India, Maharishi Kannad spoke of Anu, or atom. In modern India, Dr. Homi Bhabha gave us a nuclear roadmap. Today, this government is creating the system of finally deliver on what vision. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we stand at the threshold of another historical leap. A nuclear renaissance is now within the reach, because this will form the bedrock of a Viksit Bharat. And to reach and become a Viksit country by 2047, it is imperative that we embark on this journey. Sir, I therefore strongly support the Shanti Bill and really thank you for giving me the time and opportunity to speak. Thank you, Mr. Vande Mataram. Sharma. Honorable Member Dr. K. Lakshman. Thank you, Vice Chairman sir, for giving me this opportunity to speak on this historical bill introduced in the House. I rise today and extend my strong and unequivocal support to this Shanti Bill. This proposed legislation is not merely a technical reform or a sectoral adjustment. It is a forward-looking national statement reflecting India's confidence, maturity, and readiness to lead in clean, reliable, and responsible energy for the 21st century. Under the leadership of our beloved Prime Minister Narendra Modi ji, who is the man who takes a bold decisions to see that India marches ahead. And he also demonstrated bold reforms, and he strongly believes in three principles: reform, perform, and transform. And the philosophy is reform with foresight, growth with safeguards, and development with dignity. Sir, the Atomic Energy Bill in 1962, the act which was passed in a very different India, an India that was still consolidating its scientific institutions and technological foundations. At that time, it was appropriate that nuclear energy remained strictly within the domain of central government. No. Now, this bill not only proposes to have a semi-government and private partnership, because, as rightly said by our earlier colleagues, this government has an ambitious and commitment to go for a clean and renewable energy. And this government has taken a bold decision to see that to achieve energy independence,
to decarbonize its economy and to attain net zero carbonization by 2020, where it needs lakhs of crores of rupees, which may not be possible by any government. So, private partnership is a step towards achieving that goal. India has already taken decisive steps in this direction. Over the last 60% increase in nuclear power generation and 71% increase in installed nuclear capacity. 10 nuclear reactors are being pursued, and the country has set a bold target of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. That is, by the time the independence achieves 100 years, so the dream of making India as a Vikasit Bharat, the dream of our beloved Prime Minister to make Vikasit Bharat, so we also have to attain and achieve such goals. But unfortunately, Congress during its regime, UPA, celebrated the Indo-US civil nuclear agreement but lacked the courage, clarity and the competence to operationalize. Congress wanted the optics of reforms but not the responsibility of governance. Congress' opposition to nuclear energy has always been rooted in fear-mongering rather than facts. It was always during 10 years rule, it was policy paralysis, and it was under pressure from its coalition partners to take any decisions, and somehow we lost a precious decade where India lost. Honorable Sir, the particular instances where states like Telangana, which is upcoming in data centers and technology, cloud computing, fintech and artificial intelligence and digital services. Hyderabad today attracts large-scale investments and that demand uninterrupted high-quality power supply. The consumption has increased manifold. Right from now shortage to surplus, the electoral sector now, which has come up in Modi's regime. In this Shanti Bill, it's not just an energy reform. It is a digital economy enabler. And particularly to achieve this target, government has come out with a major nuclear energy mission in the current union budget. Under this mission, India aims to develop at least 5 indigenously designed SMRs by 2033 and to achieve 100 gigawatts of nuclear capacity by 2047. So, India's largest nuclear project, recently our beloved Prime Minister Narendra Modi ji has launched a nuclear power plant at Mahi Banswara in Rajasthan, wherein 4 into 700 megawatt projects of Anushakti Vidyut Nigam Limited with a cost of 42,000 crores is a part of India's fleet mode of program. Sir, I fail to understand why our opposition and critics, when this Shanti bill has come up, why they are so ashanti. I fail to understand. But this not only being a clean and energy sector, but also helps in social good and public welfare. Nuclear power plants currently produce 56,000 million units of clean electricity, accounting for 3% of the country's total generation. This has prevented nearly 49 million tons of carbon dioxide emissions. Importantly, nuclear power remains cost-effective with an average tariff of approximately rupees 3.83 per unit. So, behind the power, Department of Atomic Energy has developed technologies and directly benefit citizens spanning healthcare, agriculture, food sector, water purification, waste management and hydrogen, this thing also. But as I said, under Congress rule, nuclear energy was treated as a political burden, a protest management problem, a subject best avoided during elections. Congress leaders who now lecture in the House on safety conveniently forget that nuclear plants prevent 49 million tons of carbon dioxide emission annually. Nuclear energy provides round-the-clock clean power, unlike intermittent renewables. Without nuclear energy, India has to more depend on coal and imports. So, when we talk of this climate change and when we talk of renewable energy,
nuclear power. We have seen some countries like France, 90% of the electricity is produced by nuclear this thing only. But still, India has to go ahead. This bill, definitely, I assure and feel confident that it comes up with the dreams. We have seen during Vajpayee's law how our nuclear power has been demonstrated, that Pokhran was in spite of sanctions by America, but our leadership right from Vajpayee ji and Modi ji, because we have a strong will for the nation. But with this, Shanti bill draws a clear political line. It is science versus superstition, confidence versus fear, and nation building versus narrative politics. Congress as an opposition is not safety or public interest. It is about defending a failed leadership and legacy. The Prime Minister has chosen to move forward, making nation a forward. Sir, Modi ji always thinks of next generation, not next general elections. Congress always thinks of next election only. Dr. Lakshman. Modi plans, Dr. Lakshman, policies, please speak Congress on the bill. promises. Now, Please speak on the bill. sir, yes, sir. This is regarding bill only, and what type of governance we have seen. मोदी की नजर अगली पीढ़ी पर है, कांग्रेस की नजर अगली सीट पर है. ये मोदी's roadmap runs for decades. Congress road shows runs till polling day. And Modi's future is a perfect for Congress. It's a project report before elections. मोदी के लिए बहुत एक परियोजना है, कांग्रेस के लिए चुनाव पूर्व रिपोर्ट है. Modi's plans for tomorrow's India, Congress plans for tomorrow's polls. This is the change we can see between the leadership. So the entire country now believes in the leadership of Modi ji, where Modi, the dream of making Vikasit Bharat, developed India by 2047. I am sure and confident this bill definitely makes India a progressive India in all fields. I strongly support in this bill, sir. Thank you and thank you very much. Thank you, Dr. Lakshman. Now, Honorable Member Mahua Maji. वाइस चेयरमैन सर, केंद्र सरकार न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जिस शांति बिल को लाना चाहती है, एक्चुअली वो अशांति बिल है और मानवता के लिए खतरा है. सर, ये भले सच हो कि आप चाहते हैं कि देश में जो डीकार्बोनाइजेशन के लिए अच्छा है, बट सर ये अच्छा इसलिए नहीं है कि मैंने इस विषय पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है. मैंने 4 साल की मेहनत के बाद झारखंड के जो जादूगोड़ा में जहां यूरेनियम रेडिएशन से लोग प्रभावित होते हैं, उन पर यह किताब मैंने लिखी है, जो जेएनयू से लेकर साउथ तक में कम से कम 20-25 यूनिवर्सिटीज हमारे देश में उस पर एमफिल पीएचडी डिलीट हो चुके हैं. मैं उस आधार पर, उस रिसर्च के आधार पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस बिल को पास करने के पहले इस किताब को जरूर पढ़ ले. इसमें उन आदिवासियों की पीड़ा है जो जहां यूरेनियम की माइनिंग होती है सर, और ये जादूगोड़ा हमारे झारखंड में है जहां विकलांगता, स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर और तरह तरह के बांझपन की बीमारी. सर, अभी भी वहां किसी दूसरे गांव के लोग अपने बच्चों को शादी नहीं कराना चाहते और नहीं यहाँ की लड़कियों को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो तमाम बीमारियां उनको हो सकती है. और मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ सर कि इसके लिए जो एक बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अगर कहीं भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगता है तो उससे जो ईंधन बनता है वो यूरेनियम से होता है, और यूरेनियम के ईंधन से जो उसका निकला था डस्ट, और उसी से प्लूटोनियम उससे जो निकला था, उससे एक बार हमारे देश में पोखरण 1 का हम लोगों ने उसका प्रदर्शन कर चुका है. इंदिरा गांधी ने 1974 में जो पोखरण में विस्फोट किया था न्यूक्लियर पावर को दिखाने के लिए, उसमें इसी बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ था जो कि यूरेनियम और न्यूक्लियर रिएक्टर से होता है सर. और न्यूक्लियर रिएक्टर के अगर किसी गलत प्राइवेट अगर ऑपरेटर के हाथों में, अगर सिरफिरे ऑपरेटर के हाथों में ये पड़ जाए, ये ईंधन का जो भी निकलता है वो डस्ट, तो सर वो पूरी तबाही आ सकती है. इसमें इतना पावर होता है न्यूक्लियर एनर्जी पर. बम में आपने हिरोशिमा नागासाकी में देखा था कि अभी भी हिबाकुशा कहते हैं उसके पीड़ितों को जो विकलांग पैदा हो रहा है सर. और चेरनोबिल में जो डिजास्टर हुआ था, छत उड़ गया था कूलिंग सिस्टम फेल होने के बाद, उससे क्या त्रासदी हुई थी ये भी सबको पता है सर. अभी तक मशरूम वहां के लोग नहीं खा सकते हैं इतने सालों के बाद. सर, एक किताब आई है चेरनोबिल जो जिसे नोबेल प्राइज मिला है, उसके राइटर ने अपनी पीड़ा को बताई है कि कैसे मशरूम खाने के लिए लोग लालायित रहते हैं. 300 तरह के मशरूम बैन हो चुके हैं अभी तक. वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है सर अगर ये किसी प्राइवेट के हाथों में पड़े तो. और सर, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि
जादूगोड़ा में जो टेलिंग पॉन्ड है, जैसे जो यूरेनियम जो जमीन से निकलता है तो क्रशर में उसको सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश करने के बाद उसका जो वेस्ट होता है उसे पॉन्ड में जमा किया जाता है। उस पॉन्ड में चलकर कितने बीमार होते हैं, चूंकि उससे अल्फा बीटा गामा उसका निकलता है और जो कि कंक्रीट के दीवारों को भी भेद करके जा सकता है सर। उसमें किसी भी तरह का बाउंड्री काम नहीं करता और एक बार जब यूरेनियम को जमीन से निकाला जाता है तो लाखों साल तक गन शॉट्स होते रहते हैं, उसका नुकसान पूरी पृथ्वी को होता रहता है सर। हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है, इसलिए अगर न्यूक्लियर रिएक्टर लगेगा तो यूरेनियम ज्यादा निकाला जाएगा और उसका खमियाजा पूरे देश को करना होगा सर। ये किताब है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है सर। ये आदिवासियों के बारे में आदिवासियों की तरफ से लिखा हुआ। हमारे यहाँ के आदिवासी कहते हैं कि यूरेनियम को धरती के भीतर ही पड़े रहने दो, उसे मत छेड़ो वरना सांप की तरह यह हम सबको डस लेगा और न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम जरूरी है सर। जापान में जब सुनामी आया था तो न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी आ गया था, कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था सर। वो रेडिएशन कैलिफोर्निया तक चला गया था पैसिफिक ओशन को पार करके और अमेरिका ने सबसे बड़ा जनरेटर भेजा था जापान में उसे कूल करने के लिए और सर उसमें 50 साइंटिस्ट उसके अंदर सुसाइड अटेम्प्ट करने गए थे उसे शांत करने के लिए सर। सर आप जानते हैं सर ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, इसमें इसके खतरे सर 10 बार आप इसको सोचिए इस बिल को पास करने के पहले, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। क्या वो माफ करने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगी? क्योंकि एक अगर न्यूक्लियर बम पड़ा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी लाखों सालों के लिए। इतना बड़ा लेयर पूरा आ जाएगा आसमान में कि सूरज की रोशनी तक हमारी धरती पर नहीं पहुंच पाएगी सर। पूरा कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाएगा सर। और ये हम लोग देखे हैं भोपाल गैस त्रासदी में किस तरह से प्राइवेट कंपनियां बिल्कुल बेपरवाही से काम करती है सर। इस पर मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा, हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। विदेशों की तुलना करते हैं लेकिन विदेशों में मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छी है, वहां पर लोग करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट, अगर आप आए दिन पाकिस्तान और दूसरे देशों से लड़ाई करते हैं सर, अगर किसी के पास ये बम आ गया उस बाई प्रोडक्ट से तो सर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी सर। मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, मैं इस किताब को पढ़ लीजिए, इसमें तमाम बातें रिसर्च के साथ लिखी हुई है सर। तो इसलिए इस बिल को करने के पहले बार सोचिए, 10 बार 1000 बार सोचिए सर, लेकिन इसको पारित ना करें। ये शांति नहीं अशांति बिल है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू तिरुमति महुआ जी। ऑनरेबल मेंबर घनश्याम तिवारी जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज शांति बिल 2025 के लिए बोलने खड़ा हुआ हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमान जयराम जी रमेश को, उन्होंने इसमें भाषण की शुरुआत करी और पूरा इतिहास बताया और इतिहास के साथ साथ उन्होंने एक बहुत जोर की बात कही कि ये बिल जो लाते हैं इन बिलों के नाम ऐसे रखते हैं कि नाम के कारण से लोगों को परेशानी होती। जैसे इस बिल का नाम शांति बिल रखा, पहले नारी शक्ति बंधन बिल आया तो उसका नाम लिखा, अब शिक्षा अधिष्ठान का नाम रखा तो ये नाम रखा और अब आगे जो बिल आ रहा है विकसित भारत जी राम जी आ रहा है। तो इसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ये माननीय उपसभापति महोदय जब ये नाम रखते हैं तो नाम के कोई फैशन नहीं है नाम रखने का। नाम इसलिए रखते हैं कि नाम के पीछे हमारी भावना रहती। जैसे इस बिल का नाम शांति रखा तो शांति का मतलब सबसे पहले भारत ने जब ये परमाणु रिएक्टर शुरू किए तो होमी जहांगीर बाबा ने कहा था कि हम इसको शांति के काम में लेंगे परमाणु ऊर्जा। तो शांति का इतिहास, फिर हमारा इतिहास शांति का है। हम कहते ओम द्यो शांतिर अंतरिक्ष शांतिर आप है शांतिर रोषदय शांतिर वनस्पतिर शांतिर शांतिरेव शांतिर सामा शांतिर। ये जो शांति है ये हमारे संस्कृति से आती है, इसलिए इसका नाम शांति रखा। अब जब हमने नारी शक्ति बंधन रखा, उसका भी इसका नारी शक्ति बंधन इसलिए रखा कि भारत की जो नारियां हुई है, गार्गी से लेकर मैत्री से लेकर अहिल्या से लेकर द्रौपदी से लेकर सीता से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर ये सब नारियां जो हुई है, इन नारियों के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए नारी शक्ति अधिनियम बिल नाम रखते हैं। तो ये सारे नाम रखते हैं। जैसे कर्तव्य पथ नाम रखा तो इसलिए कि प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर चलते हैं और आप सब लोगों को भी कर्तव्य पथ पर चलने के लिए कहते हैं, इसलिए ये काम नाम रखा। हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो ये नाम इसलिए रखे जाते हैं। अब इन नाम से कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। ये जो बिल है, ये बिल जो आया है
ये बिल भारत की भावी आवश्यकताओं के लिए है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी हमारे जो है ना वो त्रिकालदर्शी हैं, 3 काल देखते हैं। आपने तो देखा था भूतकाल कि 1948 से लेकर आप तक आपने क्या किया, और हम देख रहे हैं वर्तमान, और ये बिल है वो देख रहा है भविष्य काल। इसलिए ये त्रिकालदर्शी बिल है, इसका ये नाम ये भी हो सकता है त्रिकालदर्शी बिल। अब मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं कि हम जो ये कहना कि केवल ये विद्युत उत्पादन के लिए है, उसके लिए है, वास्तव में आज की भारत की आवश्यकता है। भारत को जब 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तो ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना है। ऊर्जा संरक्षण हमारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और ऊर्जा उत्पादन भी हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। सारी बातों की चर्चा हुई है सभापति महोदय। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म विद्युत हमको पैदा करना है। अभी 240 तक माननीय प्रधानमंत्री 270 तक भारत को लेकर गए हैं। 2070 तक नेट जीरो करना है। ये सारे लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है और 100 गीगावाट बिजली न्यूक्लियर से हमको प्राप्त करनी है, यह 2047 तक। इसका जब ये लक्ष्य है तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमको काम करना पड़ेगा। आज हमारी जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उसमें 55 से लेकर 73% तक तापीय बिजली कोयले से होता है। अरे कोयला हमारे यहाँ पैदा होता ही है, लेकिन आयात भी करना पड़ता है, इससे कार्बन की काफी निकलता है। ये सारा काम होता है और वो महंगा भी होता है और इसकी ढुलाई भी महंगी पड़ती है। फिर दूसरी जो ऊर्जा है वो मैंने देखी है, नवीकरणीय जो ऊर्जा है वो सोलर एनर्जी का है। सोलर एनर्जी राजस्थान में बहुत हुआ है, बहुत पार्क लगे सोलर के, लेकिन सोलर एनर्जी में जितनी जमीन जाती है नीचे वो जमीन बहुत जाती है। और दूसरा उसका एक कारण हो रहता है कि वो बरसात के समय में और रात के समय में वो पैदा नहीं होती, इसलिए उसकी निरंतरता नहीं रहती है। उसी प्रकार से विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी में भी जब काम करते हैं तो विंड एनर्जी भी हमारी हवा चले हवा नहीं चले ये काम करती रहती है। तो इसलिए इन सारी जो है इनमें सातत्यता नहीं है, लेकिन इसका जो लोड बेस है परमाणु ऊर्जा का वो 24x7 है, लगातार है और 60 वर्ष तक लगातार दे सकती है। इसलिए इस प्रकार की ऊर्जा हमको आवश्यक है, इसलिए इसको विदेश के लिए खोलना पड़ता है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा उनके ऐतिहासिक निर्णयों के लिए। उन्होंने स्पेस को खोला और अब परमाणु को भी खोल रहे हैं, इस ऊर्जा को भी खोल रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं तो हम एक लक्ष्य को लेकर कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर भारत के आज तक कोई भी योजना अभी सारी बात के साथ मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा साहब 48 में ये हुआ, 62 में ये बिल आया, 66 में ये हुआ, सारे वैज्ञानिकों का भी नाम लिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन रिजल्ट क्या आया? कुल विद्युत उत्पादन का 3% है, 8 गीगावाट। खोदा पहाड़, इतने बरस तक और निकली चुया। अब वो चुया नहीं, अब हमको बहुत बड़ा काम करना, 100 गीगावाट निकालनी है। इसलिए एफडीआई के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट की छूट देना उसकी बात है। फिर वो करे कि साहब इससे सुरक्षा में क्या होगा, वो सारा क्या होगा। ये सारा बिल ऐसा है कि इस बिल ने सब चीजों के लिए खोला है। मैं बताना चाहूंगा यूरेनियम के आधार पर, अब थोरियम है घरेलू संसाधनों पर आधारित, उसका अगर प्रयोग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिएगा, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अगर हमको टेक्नोलॉजी मिलता है, इन्वेस्टमेंट मिलता है और हमारी शर्तों के आधार पर मिलता है तो उसको लेने में क्या दिक्कत है? फिर इसको बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की क्या जरूरत है? और 2025-26 में परमाणु को प्रोत्साहन करने के लिए निजी निवेश करना आवश्यक हो गया है।
ये समय की आवश्यकता है और ये बिल समय को पूरा करता है। अब आप देखिए कि छोटे जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनको लगाए जाएंगे। अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने माई बजाज सागर पर राजस्थान में उसका किया, हमारे राजस्थान में रावत बाटा में भी इसका है। तो ये सारी बात, और इसके साथ साथ मैं कहना भी चाहूंगा कि ये सारा जो है परमाणु, ये केवल इसी काम के लिए नहीं है, ये मेडिसिन के लिए भी काम आता, ये एग्रीकल्चर में भी काम, और इन सब सारे सेक्टर्स में आज समय की आवश्यकता हो गया है। और इसलिए इस प्रकार का बिल लाना, इस प्रकार का चिंतन करना और इस काम को बढ़ाकर आगे ले जाना, ये समय की पुकार की और समय पुकार में इन्होंने किया है। माननीय सभापति महोदय, एक बात कहकर फिर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। उनका कि नाम भिन्न प्रकार के रखते हैं। साहब, नाम में बहुत गुण है। नाम रखने से काम बहुत आसान होता है, उसका अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे हमने नारी शक्ति का रखा, नारियों को समझ में आ गया, बिहार में उन्होंने अपना काम कर दिया। इसी प्रकार से जो जो नाम रखेंगे वो अपना काम पूरा कर देंगे। अब ये नाम से डरते हैं। अब इसका असर बताता हूं मैं। जयराम जी, आपने राम के नाम का विरोध किया, हमने राम राम रटा। अब जी राम बिल आ रहा, आप उसका विरोध कर रहे हैं। हमने राम राम रटा तो चोर, हाँ यही बैठे, तो हमने राम राम रटा तो हम उधर से पार कर कर इधर आ गए, और आप राम राम नहीं रट रहे तो वहां के वहीं बैठे हो। इसलिए नाम की महिमा है। नाम अजामिल से खलकोटी, अपार नदी बहुबूढ़ काढ़े, जो सुमरे गिर मेरु सिलाकत होत अजाकुर बार दी बाटे। इसलिए ये राम के नाम है, शांति या जो भी नाम है वो सोच समझ कर रखे गए हैं, और आप सबको भी शांति मिले। इसलिए ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। Thank you, Kanchiyam Tyagi. Now, Honorable Member Joske Mani. Yeah. So I oppose this bill not because we are against nuclear energy, but because we are against the reckless privatization of this highly sensitive sector. So this bill opens the doors for private players to build on and operate nuclear plants. Now we have seen this movie over and over again by this government by privatizing the sensitive sectors and areas. Every sector the government touches for privatization, it says efficiency, ease of doing business, and private expertise. In reality, what happens? Same cost, same procedure, same producers, same beneficiaries. So today, if you switch on the TV and see privatization news, you don't need an instant brain to guess the name of the private players. If you see the seaport, if you see the airport, and we see the private players are playing where and how and when and by whom. And also, I will not be surprised a day will come, even the army will also be privatized. The government says this bill will transform India. But sir, transformation should not mean transferring risk from big corporate companies to ordinary citizens. Sir, this bill removes a very crucial safeguard. Under the 2010 law, if a nuclear accident happens due to defective equipments or faulty material, the operator has the right of recourse against the supplier. Under this bill, the operator remains liable, fine, but the suppliers of nuclear equipments and the fuel are completely excluded from liability. So the operator pays, and when the operator limit is exhausted, the government pays. When the government pays, the taxpayer pays. So sir, the profit are privatized, but the risk are nationalized. Is this make in India, or this take profit from India,
leave a liability to India. If suppliers know they are protected from liability, where is the incentive to ensure the highest quality? Sir, the government argues that the global suppliers demand this change. Sir, since when does India law get written to please the foreign corporations? If global suppliers are afraid of accountability, shouldn't that worry us more, not less? Sir, the Civil Liability for Nuclear Damage Act was framed after global experience. Sir, like global, it was meant to ensure victim-centric justice, not investor comfort. I conclude, sir, we are not against the nuclear energy. We are not against the technology. We are against the blind faith in privatization and policy captured by the powerful lobbies. Hence, I request the government to send this bill to the select committee before consideration. Thank you, sir. Thank you, Mr. George K. Mani. Now, Honorable Member Dr. Ajit Madhavrao Kopchade. धन्यवाद सभापति महोदय। हिंदुस्तान की सुरक्षा बढ़ाने वाला यह विधेयक है और महासत्ता बनाने वाला भी यह विधेयक है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं इस सदन में दिन ब दिन देखिए ऐसा विरोध कर करके हमारे विपक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। और यहाँ बैठे वाले देखो, हमारे पाठशाला के जो विद्यार्थी है एनडीए के, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो ये हमारे जो पाठशाला में जो एनडीए के जो विद्यार्थी बैठे हैं, इनको सीखने को मिलता है, सीखकर ही आदमी आगे जाता है। और ये सारे विद्यार्थी सदन खत्म होने तक बैठते हैं। और अभी जयराम रमेश जी नहीं है, मुझे तो उनके बारे में बहुत प्यार है, क्योंकि वो अकेले ऐसे विद्यार्थी इस पाठशाला के, वो सब चले जाते हैं, मगर अकेले बेचारे जयराम रमेश जी वहां बैठ के रहते हैं। अब बेचारे वो चले गए हैं, मुझे उनके ऊपर बहुत प्यार है, ऐसा उनको बता दो आप लोग। हमारे विपक्षी नेताओं को शांति नहीं चाहिए, क्योंकि वो शांति के विधेयक का विरोध कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भगवान गौतम बुद्ध हमारे हिंदुस्तान की श्रद्धा, प्रेरणा एवं अभिमान है। हमारे अभी मित्र जयराम रमेश जी ने बहुत कुछ बातें बोली, हमारे विद्वान सदस्य ने भी कुछ बातें बोली। अरे पूरा ये जो हमारे विद्वान और अभ्यासु और विपक्ष के जो हमारे जा रहे जो सदस्यगण हैं, जब जयराम रमेश जी बैठते हैं, प्रामाणिकता से आखिर तक सुनते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि यह नाम शांति विधेयक क्यों रखा गया। क्योंकि आज रूस, हमारा यहाँ पर अमेरिका, जापान, इनके साथ हम परमाणु परियोजना में अभी साझेदारी कर रहे हैं। कुडनकुलम, जैतापुर और जैसे रिएक्टर्स, ये विश्व के सबसे बड़ा अभी संयंत्र बनाया गया है और बनने जा रहा है। यह हमारा देश मजबूती और विश्व शांति का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए बहुत लोगों ने कहा है, और जनता भी कह रहे हैं कि अब बुद्ध मुस्कुराया है। भगवान गौतम बुद्ध जी के चेहरे पर स्मित हास्य दिखाई दे रहा है, जिसको हम मराठी में हम सब तरफ कहते हैं आनी बुद्ध हंसला। ऐसे गली गली में चर्चा है। इसलिए इस विधेयक को शांति विधेयक के नाम से मोदी सरकार ने इसको शांति विधेयक का नाम रखकर दुनिया के विध्वंस को नहीं, बल्कि शांति का संदेश माननीय मोदी जी ने दिया है। इसलिए सबने मिलकर उनका अभिनंदन करना चाहिए। हमारे बहुत सारे विद्वान एवं अभ्यासु विपक्ष के जानकार नेताओं को इस शांति के विधेयक की तकलीफ क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने एक नाम लिया अप्सरा का, उन्होंने एक नाम लिया जरीना का, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हम भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी है। हम इस देश को, मोदी जी को, हमारे इस देश को गौतम बुद्ध की राह पर इस जनता को ले जाना चाहते हैं और शांति का संदेश हम इसके माध्यम से पूरे देश को देना चाहते हैं। मैं विपक्ष को यह भी बात बताना चाहता हूं कि हम स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं। हम इसके साथ जनता की सेवा भी कर रहे हैं। मैं मेडिकल साइंस का छात्र हूं। कैंसर केयर, न्यूक्लियर मेडिसिन, पेट स्कैन, चिकित्सा, रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल उत्पाद के माध्यम से हमारी क्षमता वैद्यकीय क्षेत्र की, चिकित्सा क्षेत्र की बढ़ते जा रही है और उसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं।
हमारा परमाणु ऊर्जा विधेयक देश की करोड़ों जनता की सेवा करने वाला यह विधेयक, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सभी सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा समर्पित कार्यशील कैंसर देखभालों का निर्माण का योजना भी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मैं विपक्षियों को बोलना चाहता हूं, शांति के साथ देश की सेवा कार्य भी इसके माध्यम से बढ़ती जा रही है। मैं इसलिए हमारे इस विधेयक के बारे में मुझे गर्व है और अभिमान है। कुछ ही देर पहले मैंने हमारी एक टीएमसी के बात सुना, वो कह रही थी हम दो हमारे दो, लेकिन मैं वो सांसद बहना को बोलना चाहता हूं कि अब मैं और मेरा भतीजा, ये जमाना अभी खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। मैं और मेरा भतीजा का कारोबार खत्म होने वाला है। कांग्रेस के तो हम दो हमारे दो का जमाना हमने खत्म कर दिया है। अभी हम जो है, हमारे मोदी जी, मैं और मेरी 140 करोड़ जनता का परिवार का ये जमाना हम मानते हैं। इसलिए आने वाले 100 साल तक आपको कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान को सेवा की तरफ ले जा रहे हैं, हिंदुस्तान के शांति की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि हम 140 करोड़ जनता को हमारा परिवार मानते हैं। वो मैं और मेरा भतीजा, मैं दो और दो, हमारा जो परिवार, ये सिंडिकेट का जमाना चला गया है। हम पूरे हिंदुस्तान को परिवार मानते हैं और परमाणु शक्ति के माध्यम से इसको महासत्ता के तरफ हम ले जा रहे हैं। मैं विपक्षियों को बोलना चाहता हूं, आज जयराम रमेश जी यहाँ नहीं है, बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर होमी भाभा जी का, डॉक्टर अनिल काकोडकर जी का उन्होंने बहुत याद किया, लेकिन आज ये याद क्यों आई? सालों साल से हम दिलो जान तक डॉक्टर होमी भाभा को और अनिल काकोडकर को हमारे दिल में हम रखते हैं, मगर आज उन्होंने हमारे मिसाइल मैन, आधुनिक परमाणु शास्त्र के जनक माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र नहीं किया। लेकिन हम आज उनका श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करते हैं, आज भी हम उनको विनम्र अभिवादन करते हैं। हमारे एक मित्र, बहुत विद्वान मित्र है, उन्होंने बोला अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति। अरे भाई, हमारे ये जो अदृश्य शक्ति का एक बात जिक्र किया और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी उन्होंने बोला। ये अदृश्य शक्ति का जमाना चला गया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जमाना गया। अब स्वदेशी का नारा हिंदुस्तान के गली गलियों में गूंज रहा है। ये अदृश्य शक्ति पहले सरकार का रिमोट कंट्रोल हुआ करती थी, अब अपनी मां का अंत्य संस्कार करते ही तुरंत देश की अविरत सेवा करने वाले, चाय बेचने वाले तेजस्वी विकास पुरुष की ही सरकार है। ये पहले जैसा अदृश्य शक्ति से सरकार चलाने वाला कारोबार चला गया। अभी अपने भारत माता को अपना मां मानने वाले विकास पुरुष का ये सरकार है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, एक ने बोला है कि कुछ लोगों के लिए भलाई के लिए किया है, लेकिन 70 साल से जो सिंडिकेट चलाती थी उसका क्या है? जो 70 साल से सिंडिकेट एक कंपनी के माध्यम से इस देश को चलाती थी, अभी मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि 10-11 साल से 2014 से यहां पर जो बैठे हैं हमारे सारे साथी, ये किसान, मजदूर, गरीब परिवार से चुन के आए वाले इन जन सेवकों की ये सरकार है, क्योंकि ये पहले जैसा अभी रहा नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों को विनती करता हूं कि इस विधेयक का कृपा करके विरोध मत करो, क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से 24/7 बिजली आ रही है। 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश को लगभग सार्वभौमिक बिजली उपलब्धता तक पहुंचाया है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी जैसे स्थिर बेसलोड ऊर्जा अनिवार्य जैसे नवकरणीय ऊर्जा को पूरक बनाएगा। ये कोयले की निर्भरता भी हमारी घटाएगा, हमारे जलवायु लक्ष्यों को भी अंतर्राष्ट्रीय पूरा करेगा। हमारे 2047 तक हमारे 100 गीगावाट परमाणु क्षमता भी हमारे प्राप्त करने का एक लक्ष्य हमने रखा है। शांति बिल एक रणनीतिक आवश्यकता है, न केवल हमारे एक नीतिगत विकल्प है। हमारा खुद का कुछ नहीं है, देश की समस्या और देश की सुरक्षा और देश की शांति के लिए है। अब यूपीए के समय क्या था, उनकी क्यों विफलता हुई? उन्होंने 63 गीगावाट का वादा किया, 7 गीगावाट भी पूरा नहीं कर पाए। एनडीए की सरकार ने परमाणु क्षमता लगभग दोगुना करके इस देश को आगे बढ़ाया है। हमने 21 नए रिएक्टर जोड़े हैं। अब मुझे बताने में ये खुशी होती है
इस बजटीय आवंटन को 9,800 करोड़ से बढ़ाकर 24,000 करोड़ से अधिक हमने करके बताया है। ये हमारी सफलता है। शांति बिल जो है भारत को जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स अगली पीढ़ी के तकनीकों में वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाएगा। इसमें औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षित, सस्ती और त्वरित ऊर्जा भी उपलब्ध होगी। वैश्विक विश्वास पर हमने मोहर लगाई है। जैसे रूस, फ्रांस और अमेरिका, जापान हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत का एक संतुलित और दूरदर्शी मॉडल है। यह विधेयक भारत को केवल ऊर्जा संपन्न नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से सशक्त और पर्यावरणिक रूप से जिम्मेदार राष्ट्र बनाने के लिए दिशा में एक निर्णायक कदम है। मैं माननीय सभापति महोदय आपको ये इस सदन के माध्यम से आपको ये विनती करना चाहता हूं कि ये हमारा विकास के साथ, हम पर्यावरण के साथ, राष्ट्र हित सर्वोपरि, इसके माध्यम से हम इस देश में हम आगे बढ़ने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका मन से धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का संबंध इस समय दिया है। ये हमारा एकीकृत एकल कानून का प्रावधान है। इसमें नियंत्रित निजी भागीदारी के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। प्लीज वाइंड अप, प्लीज वाइंड अप। और भारत का सबसे बड़ा तीसरा विद्युत उत्पादक देश बनेगा। इसलिए सभापति महोदय, हम महासत्ता की ओर जा रहे हैं। इस विधेयक को आप विरोध मत कीजिए, नहीं तो दिन ब दिन आपकी संख्या कम होती जाएगी, हमारी संख्या बढ़ती जाएगी और आपकी पूरा ये सदन हमारे विद्यार्थियों से भरा पड़ेगा। पूरी पाठशाला के मुख्याध्यापक, माननीय सभापति साहब, आपको धन्यवाद। Honorable members, a supplementary list of business has been issued for consideration and passing of the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission VP G-Ram G Bill 2025 as passed by the Lok Sabha. Honorable members may access the supplementary list of business in their respective multimedia devices and members portal. The copy of the bill as passed by the Lok Sabha has been circulated to the members portal. Amendments to the bill have already been received from some members. The members who have not submitted amendments but desire to do so may submit the same by 5:45 p.m. so as to enable the Secretariat to process and circulate the list of amendments. Notices received after 5:45 p.m. will not be processed. After due consultation, I have allotted 8 hours for discussion on the Bill 2025. I hope this House agrees with the time allotted. Accordingly, the sitting of the House will continue beyond 6 p.m. So under rule, what rule? 33(1). What So rule? you have not called a On what BSc. rule, please? 33(1). Sir, under rule 33(1), it shall be the function of the committee to recommend, that is the Business Advisory Committee, the time that should be allotted for the discussion of the stage or stages of such government bills and other business, as the chairman in consultation with the leader of the council may direct for being referred to the committee. Sir, there has been no BSc and still how can we take up the bill, sir? No time was allotted in the BSc. There are list of government bills taken up in Rajya Sabha without allocating time by BSc. That was in 2008, the South Asian University Bill 2008, and the Information Technology Amendment Bill 2008 on 23rd December 2008, the AIMS Amendment Bill 2008 on 4th September 2012, the Sikh Gurudwaras Amendment Bill 2016 on 16 March 2016, the General Goods and Service Tax Amendment Bill 2023 and the Integrated Goods and Service Tax Amendment Bill 2023 discussed together on 11/8/2023, the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024 on 27 November 2024, the Promotion Regulation of Online Gaming Bill 2025 on 21st August 2025. Based on this convention,
This has been allocated. Please take your seat. No point of order. Please take your seat. Please take your seat. Shriman Haris Biran. Please take your seat. Shriman Haris Biran, please. Thank you, Chairman, sir. Yes, nothing. Sir, Shriman Haris Biran. Yes, I will request the minister to respond. Please, you take your seat. He will be responding to you. We wanted to fix the time in the Business Advisory Committee. However, our colleagues from the opposition bench did not agree to the time. On the point of order raised by the honourable member from Trinamool Congress, you have given the ruling. We will abide by the ruling. We are bound with that. Now, regarding time, government has no problem in extending the time. We had offered 4 hours. Some of the members had said that it should be 8 hours as it was discussed in Lok Sabha. Same duration should be taken up in Rajya Sabha. We have no problem in that. And also, sir, we will be arranging very good quality food for the honourable members if we are going to sit till late night. Now, Shriman Haris Biranji, you please, otherwise I am going to call the other person. Please. Thank you. No point of order. Please take your seat. Same point of order again and again you are raising. It will not be acceptable. You please. Haris Biranji, please. Please, Haris Biranji, address please. Thank you, Chairman, sir. Sir, this legislation is a fundamental rewriting of India's sovereign social contract. The same subject we cannot allow the point of order again and again. You are on different subject. Are you on different subject? So tell me. The allocation of time in regard to the bill or group of bills or other business as recommended by the committee, that is Business Advisory Committee, shall be reported by the chairman or in his absence by the deputy chairman to the council and notified in the bulletin. That has not happened. How can it be, sir? No, sir, the same point you are raising. The same ruling has been already announced. Now Dr. Shriman Haris Biranji, please. Now, please, you address. Sir, please, sir. Nothing will go on record except Shriman Haris Biranji's speech. Chairman, please. Chairman, sir, please reset my time. Please reset my time. You talk. Yes. Mic is there. Thank you, Chairman, sir. Chairman, sir, this legislation is a fundamental rewriting of India's sovereign social contract. Please, please. Says Shanti. What is actually happening is that the contents of this 57-page document, which actually declares a war on the safety, sovereignty and financial security of the Indian people, sir. It is a... Address, please. Yes, sir. Nothing will go on record. Sir, this legislation... Except Shriman Haris Biran's speech. Have you paused? Please. Sir. Yesterday we saw how the insurance bill was passed, sir. It paved the way for cartelization of foreign insurance companies over here, sir. Today, sir, this legislation is being passed, privatizing the nuclear energy sector, sir, while dismantling the liability framework established after Bhopal gas tragedy. Both. The convention I have already observed. We are going by that. Please, address. Sir, house is not in order, sir. House is not in order. Sir, house is not in order, sir. I can't speak, sir. House is not in order, sir. No, you please address. Otherwise, I am going to call the other speaker. Sir, whether you... I am able to hear you. Please, you talk. I am speaking, sir. You are able to hear me and I am able to hear you. Why you are worried? You please address. I am speaking, sir. Today, sir, the legislation privatizes the nuclear energy sector while dismantling the liability framework established after Bhopal gas tragedy. Sir, have you forgotten about the victims of the Bhopal gas tragedy, sir? Have the government forgotten about the safety of our dear brothers and sisters, sir? Now, sir, these legal proceedings in Bhopal gas tragedy went on for 30 years, sir. The proceedings in the American court, proceedings in Canadian court, proceedings in Indian court, sir. Despite that, our brothers and sisters have not secured justice, sir. Now, posterity will judge us very badly, sir, if you are going ahead with this bill, sir.
Now, sir, this bill actually attacks the right to life by substituting this absolute liability clause. That no fault liability Ruling has been given already for them. For everybody, I have to give a ruling separately. No. Please address. Sir, under clause 13, operator liability is capped at 3,000 crores, sir. How can you cap the liability of the operator for 3,000 crores, sir? There has to be an absolute liability for the operator, sir. They are